थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए। कुछ इम्प्रोवाइजेशंस मैंने ट्राई किए थे। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, मेरे महबूब समझिए जरा मौके। It's not like that. You keep it a little like legato-ish so that it flows. It's not like tick, 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 tick. Hi, this is Madhubanti Bagchi and you're watching me on Mashable Todphod. आज की रात मजा हुस्न का। मैं क्योंकि उनके साथ 2018 से काम कर रही हूँ तो उनको मेरे रूट्स के बारे में थोड़े बहुत तो पता है, बिकॉज दे नो दैट आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। बट ऐसा नहीं है कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, तो क्या होता है कि आई कैन ब्रिंग इन सम इन्फ्लुएंसेस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इनटू कंटेम्पररी म्यूजिक एंड प्रेजेंट इट। सो व्हाट दे टोल्ड मी स्पेसिफिकली इज दैट डोंट नेसेसरली मेक इट अ बॉलीवुड पॉप सॉन्ग, बिकॉज अपने बॉलीवुड में ज्यादातर हम पॉप गायकी सुनते हैं। तो दे टोल्ड मी दैट यू सिंग इट लाइक यू वुड सिंग अ ट्रेडिशनल सॉन्ग। इफ यू वर टू परफॉर्म इट ऐसे बैठक में अगर आपको परफॉर्म करना, तो हाउ वुड यू डू इट? यू सिंग इट दैट वे। सो आई थिंक दैट वाज द वोकल ब्रीफ दैट आई हैड गॉट। आज की रात मजा। हम लोग बहुत कुछ ट्राई तो कर रहे थे क्योंकि सो यू ट्राई आज की रात, ये है भी एक वेरिएशन में, ये है सब कुछ इम्प्रोवाइजेशंस मैंने ट्राई किए थे। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए आज की। सो जस्ट टू मेक दैट विच इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑल्सो, कि आप हर एक आइटरेशन में आप कुछ ना कुछ अलग करते हो। लाइन को सेम रख के कहीं पे कुछ चेंज कर दिया, नॉट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड ऑल्सो अनदर थिंग जो सचिन सर ने मुझे सजेस्ट किया था इज टू नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ी फुर्सत भी, ये मैं एक मॉडरेट वॉल्यूम पे गा रही हूँ। इफ यू लिसन टू द सॉन्ग you'll see a slight change in texture, which was obviously mixed later on and kind of brought onto the same platform as, you know, the two parts by Eric sir. So when the song starts, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, this is actually a softer part. I have sung this a little softer than आज की. So when आज starts, it starts नीचे. So आज की रात, this is more open than that beginning of the song. And if you listen to the full version of the song, it has an ad-lib part which starts like बंदे तो क्या. So that I have sung as much as possible in a traditional way. And मुझे लगता है कि for this song they wanted the singing to be 100% Indian. Even in the antara, मेरे महबूब समझिए जरा. So what Sachin sir specifically had told me that keep it very legato-ish. It is not like मेरे महबूब समझिए जरा मौके. It's not like that. You keep it a little like off the beat, a little legato-ish so that it flows. And even the choreography is like that. It is a little flowy. It's not like tick, 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 tick. Even in Hindustani singing, if you are listening to classical artists, there is nothing called sa. If anyone is doing it, it's wrong. Sa is sa, re, ga, ma. These are all straight notes. So if I'm doing आज की रात रात, this little bit of vibrato is only to give an emotional touch to it, because it is not a bandish, right? So we have to make it little lesser in weight, because a bandish is very heavy in weight. आज की रात मजा हुस्न का, ये बहुत गजल टाइप है ना ना, ये ठुमरी में भी नहीं होता है. आँखों से लीजिए, अभी इसमें थोड़ा सा you see a little touch of ठुमरी. So it's a mix of different styles of Hindustani singing, a lot less of pop western singing. It has a lot to do with the lyrics of the song, क्योंकि meaninglessly अगर मैं ऐसे दो words के बीच में if I take a breath where it doesn't make sense, a lot of people write it down, but I usually figure it while listening to the song, and I also
if there is a lyricist like Amitabh Da, I think he's very clear about where the breath should be taken, because he's a great singer and he has that aesthetic. He understands it very well. So I remember in the Antara only, समझिए जरा मौके की नजाकत. That's a long one. मेरे महबूब समझिए. So I can take a breath after मेरे महबूब. It's like I'm calling that person. Pause. समझिए जरा मौके की नजाकत. I cannot take a breath like मेरे महबूब I cannot take a breath between मेरे and महबूब. It has to be between मेरे महबूब, pause, समझिए जरा. The way you recite, you can also, a very easy way of doing it is also if you can recite the lyrics on your own without tune. Just पढ़ो उसको. मेरे महबूब समझिए जरा मौके की नजाकत. आप मौके की नजाकत नहीं गाओगे ना, या वैसे नहीं बोलोगे. So basically you have to scan out how the lyrics would make sense if you speak them and then sing it like that. There's not a lot of head voice except one place, because my natural key, I sing from A, and I think this song is from D or E flat if I'm not wrong. It is a little on the higher side for me. The portion that the next line comes in the Antara, के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाजत. So I am singing now on a lower key. So there are different ways of doing it. So I can go full throat. हसीनों की, ऐसे भी कर सकते, बहुत लोग ऐसे गाते हैं. But for a song like this, where it is a very sensual and it's a very seductive sort of a feeling, especially in the Antara where it's sort of a request, there's a conversation going on. So if I put pressure on that place, it will not sound good. So, के खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की नाता. Just touch it and come back. Make it as brief but sweet in nature. Then next line, हसीनों की इजाजत. So as softly and as delicately you can present the song. So this song demanded a full-throated voice, but also a little bit of nazakat wherever you can put it as required. It is so important, and especially आज की रात में बहुत ज़्यादा ऐसे उर्दू लफ्ज़ भी है. तो I felt that if you are doing it, it should be done correctly. Waqt, but so I have never said waqt. It's waqt, the way it should be said. Sometimes we don't care about it, and sometimes कैसा होता है कि वो composer और lyricist की तरफ से भी आता है कि don't over enunciate. It's not hardcore Urdu, because we use Urdu words in our songs a lot. This song has a lot of Urdu words, and Amitabh Da is very particular about his pronunciation. वो उनके notes में लिखा रहता है बहुत specifically कि इसको ऐसे कहना है. Voice note भी भेजते हैं कि it should be pronounced like this and not that. So it's so specific, and it's so helpful for singers because it's not our first language, right? So we get a little carried away with the emotion of the song, and थोड़ा बहुत वो pronunciation में तो गलती कर देते हैं. Like अभी मैं गलती बोल रही हूँ, but in a song, I have to sing it like ghalti. There's a song called Galat Fehmi, so I cannot sing like Galat Fehmi. Galat, it should sound like galat because the word is Galat Fehmi, not galat. Mauke ki nazakat. So mauka, we say mauka, right? But the word is mauka. Mauke ki nazakat. So that, I think, while singing that note, because it's a high note, मेरे महबूब समझिए जरा मौके. So I have to sing q while hitting the high note. So वो मुझे first 2-3 go में थोड़ा सा time लगा था. Then I was like, okay, that's why it took a little while to get used to the song.